So hello everyone, audio video clear अछि मते टिके कंफर्म करे दियो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि। ऑल क्लियर गाइस? भाबिथिबा जोडे संडे पुणी परि वर्षा पाग होउची सेथिरे पुणी माने छाडू नाहंती आसी पाठ पढौछ कोन करिवु आपण मानक पई भविष्यत पई ना। Okay, so hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me how are you? केमिति सब अच्छो हो प्रिपरेशन बहुत भल से चली थिबो गाइस। देखंतु जो माने प्री सीजीएल रो प्री क्लियर करिसंती से माने मेंस लिखिबे। दैट डजंट मीन के जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करबा एरा खाली मेंस रे ही पडिबो। आपनकर अपकमिंग एग्जामिनेशन ओपीएससी एसओ बाय दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रुशियल एंड इवन आपन मानकर जूनियर असिस्टेंट हो पीओ हो ए सब एग्जामिनेशन पे सब क्वेश्चन आपनकर इंपोर्टेंट ही रहिबो हैला। तो स्टार्ट करिबा डिस्कस करिबा आज रो क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मते कहि दियंतु ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि तो कोन आउ संडे केमती तो मानकर गला प्रिपरेशन पाठ पढारे जाईची ना वर्षा रे ओदा हे जाईची। ओके तो स्टार्ट करिबा आसंतु। ओके फाइनली जोक्स अपार्ट डिस्कस करिबा डायरेक्ट जीवा क्वेश्चन ऊपर को। मो शॉर्ट्स देखि सब आसी छ शॉर्ट्स देखि छ सब प्रणाम गुड इवनिंग समस्त को प्रणाम गुड इवनिंग। टाइमिंग टा मो पई यूजुअल नुह और टाइम रे आसी जाईची कोन करिया आसी 10 रु 12 मु नै थांती बट केडी सर कहले ना 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 मु नेबी ना हो देखो। सो कोन रहिछ आपण माने ऑलरेडी जानिचंती ओपीएससी एसओ पई जदि आपण माने प्रिपरेशन करूचंती ताले 1999 देकी आपण माने जॉइन करि परिबे। जूनियर असिस्टेंट मई सहकारी बैच आपण माने जॉइन करि परिबे। एसओ पई आपणकर अनुशासन बैच ताले यार प्राइस बहुत नॉमिनल अछि 1199। डायरेक्ट जीवा हम टॉपिक ऊपर को नंबर बकवास। चल भरत बाबू वेरी गुड इवनिंग। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आपन को कोन देछि देखो ना क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। एटी क्वेश्चन आपन को क्लाइमेट ऊपर आसी गला माने फर्स्ट क्वेश्चन आपन को ईवीएस रा। ओके तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपन को ईवीएस रा आसीबो जेमिति आपन को मेंस लेवल ला क्वेश्चन से टाइप रो ही आनी छी डोंट बी वरीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मते टिके देइ दियो त छुआ माने। गुड इवनिंग समस्त को मते कहि देले क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज कहूची दिस इज कॉज्ड बाय कहा द्वारा हबो। आपण माने जानि चंदी ग्रीन हाउस गैसेस दैट मींस कहूची जत्ते सब ग्रीन हाउस गैसेस अछि ते माने आपनकर ट्रैप करिवे इंफ्रारेड को एंड माने इंफ्रारेड रो हीट को जे कि आपनकर एटमॉस्फेयर को नै के आसे एंड ड्राइव करिवो टोटल द कोर वार्मिंग मेकानिजम्स को। सेति लागि ग्रीन हाउस गैसेस तो हबो। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस पई ही तो आपनकर ओजोन लेयर धीरे धीरे कोन ना डिप्लीट हे कि जाउची आपनकर शिल्डिंग जोन टा कूलिंग हे कि जाउची। सो आपनकर ये भी रहउची पॉल्यूशन भी रहउची। सो राइट आंसर हबो कोन ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। सी ना क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द रीजन्स वेदर इवेंट्स। The earth climate is not static over the billions of years of the earth existence. It has changed many times in the response to natural causes like sunspots, ice ages, glaciations, etc. Managing of climate change आपनकर every options relate करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियंतु। वेरी गुड इवनिंग त्रिविक्रम आसंतु। What is the current rate of global warming per decade? What is the current? Okay, what is the current rate of global warming कथा कहिछि क्विकली आंसर दियंतु। What is the current? ओके तो राइट आंसर आपनकर कोन हे गेला देखि क्विक केतन आंसर दोछ 0.1 डिग्री दे दियो 0.2 0.3 0.4। सो राइट आंसर आपन मानकर क्विकली आंसर दियो। केही गोटे दे पारुन आंसर सिंचन बाबू अछनी माने से ही आंसर देबे। आपन माने सब पछरे पड़ी जिवे
जदि सिंचन को किए टक्कर देके आंसर दे परिबो ताहले तार भी मेंसटा क्लियर हे जिवो तो 0.2 डिग्री सेल्सियस सहित हम रिलेट करूचे दैट मींस 0.1 त आपनकर बहुत ही कोन माने दैट रिप्रेजेंट द लॉन्गर टर्म आपनकर हिस्टोरिक वार्मिंग थिला बट नाउ ए डेज हम कहि परिबो ऑफिशियली आपनकर रिकॉग्नाइज्ड हेछि स्टैंडर्ड बेसलाइन रेट ऑफ द 0.2 डिग्री सेल्सियस आफ्टर दैट. So right answer asla current rate of the global warming is about 0.2 degree Celsius and since the late 1970s the global average temperature has increased by about 1.4 degree to 1.5 degree. Question आपन सब पचारिबो कि late 1970s रे आपन कर केति कि थिला and increase हे कि केति कि हेछि as of now केते डिग्री आपन कर हेछि ना 0.2 degree सब जिंस को आपन मान को मन रखिया को पड़िबो आज प्रीलिम सब देइछो ओसीएस प्रीलिम्स देइछो सब केमति हेछि टिके कहले देखि मते कोन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट आपन कहले दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट पचारिछि टू ऑब्टेन सुइटेबल टेंपरेचर फॉर प्लांटेशन of heating the atmosphere by absorption of infrared or pacharichi infrared radiation by atmospheric carbon dioxide by which barren mountain changes into the green or in which deep water seems green तो ये सब को हम जदि रिलेट करै कहि परिबा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रे आपनकर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड radiation by atmospheric carbon dioxide will be the right one 3 number केते कहउछ राइट आंसर समस्त का आंसर कोन होछि ना बी because we know the atmosphere or the heating of the atmosphere by absorbing the infrared radiations the atmospheric carbon dioxide को कोन करूछि ना लीड करूछि and this defines the exact कोन ना scientific mechanism where the heat energy reflect करे the heat energy reflecting off the earth gets absorbed by the gas molecules. So next question देखि दिया right answer आपनकर कोन हेला ना B and greenhouse gases से के जीवन ना gases like आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड and water vapor आपनकर largely present थाए. Next question answer मते देला what is greenhouse effect the greenhouse effect माने आपन को कोन कहउछ के कहइबो what is greenhouse gases पचारिली एबे मते कोन तो what is greenhouse effect the greenhouse effect कहले त माने कोन बुझुछ क्विक कहि छी इंक्रीज इन ग्लोबल टेंपरेचर जेतेबेले ग्लोबल होउनी त मते काहे लागोनी वीडियो लैग होउची बोली अरे यार वीडियो लैग कोन करबी गाइस वर्षा होउची सरी गला ना तो फुल नेटवर्क मोर अछि मिछ कहउछ सबु लैग होतला एबे ठीक अछि गाइस ठीक अछि ना हां ओके आसो तो कोन कहला ना जते आपन इंक्रीज हो ग्लोबल रेशियो जते आपन इंक्रीज होची माने ग्लोबल टेंपरेचर रेशियो जते इंक्रीज होची आपन एटमॉस्फेरिक ट्रैपिंग हे जाउची ओके कोन होउछ तम आसो नेक्स्ट कोन कहउची ना दिस इज अ सिंपलर टर्म द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन गैसेस in the earth atmosphere trap the sun heat okay next कोन कहउची देखो ना अच्छा ए क्वेश्चन ता आपनकर बहुत इंपोर्टेंट एंड ए प्रोटोकॉल ऊपर मार्क माय वर्ड क्वेश्चन आपनकर पड़ी की अछि हैला तो यार आंसर मते देला कीटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट कीटो प्रोटोकॉल आपण माने रिलेट करेबे कहा सहित कीटो प्रोटोकॉल माने हमें कोन बुझिबा ना रिलेट ए सब हमें पढुची कोन एनवायरनमेंट ऊपर दैट मींस आपनकर क्लाइमेट चेंज देखो वाटर पोल्यूशन तो हबनी एयर पोल्यूशन हबनी ए दीटा भीतर आपण माने कोन गिरगिरी हेबे तो राइट आंसर आपण माने कहा को देबे मत लिखोंदु जल्दी 1997 ने कीटो प्रोटोकॉल यस एंशिएंट सो राइट आंसर हमें कोन कहूजे ना ये आपनकर ग्रीन हाउस गैस सहित रिलेटेड पछरी बेकी मैम ताले क्लाइमेट चेंज सहित रिलेटेड प्रोटोकॉल सब कोन ना क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हमें कहरिया जदी से आपनकर रिप्रेजेंट करिवो कहा को ना टोटल एनवायरनमेंटल थ्रेट को नै की एंड दैट द प्रोटोकॉल बिलोंग्स अंडर द क्लाइमेट चेंज माने ग्रीन हाउस गैस को नै की जति का प्रोटोकॉल आसुची से सब आपनकर क्लाइमेट चेंज को नै की हबो बुझा पड़िला किंतु क्लाइमेट चेंज इज नॉट अंडर द ग्रीन हाउस गैसेस एति बुझला ना कंप्लीटली क्लाइमेट ऊपर आपनकर डिपेंडेंट रहइबो एनवायरनमेंट हैला हां 1987 आपनकर मॉन्ट्रियल एग्जैक्टली आसीबा तापर क्वेश्चन व्यस्त होनी तो देखो आपनकर कीटो प्रोटोकॉल केबे आसीला ना ग्रीन हाउस गैसेस को नै की 1997 ने थर्ड मीटिंग ऑफ द यूएनएफसीसी कोन यूएनएफसीसी मीटिंग रे आपनकर हेतिला आमे ताको कहउचे कॉप 3 मीटिंग रे हेतिला legally binding kotla the targets were approved by different countries and they came to be known as the Kyoto protocol कोन ना कीटो प्रोटोकॉल ना रे
and the mechanism proposed by Kyoto Protocol to reduce the emissions included joint implementation, clean development mechanisms, and the emission trading. ए सब को नहीं. Next को मते. Now when the environment कौन कहूची? Now when the Environment Act for Preservation and Protection of the Environment was passed by the Government of India, केबे आपनकर पास हेतिला छुआ? जय जगन्नाथ अहल्या. बहुत भलो अछि तम पचाला पर आउ टिके भल लागछि आ को कोन कहू राइट आंसर व्हेन वाज द एनवायरनमेंट जोटा को हमें प्रोटेक्शन एक्ट कहूचे इंडिया रे पास हेथिला 1986 यस जितेंद्र 1986 रे आपनकर कोन ना पास हेथिला सिंचेन भी 86 दैछंती वेरी गुड सो कहिबा जदी 1986 रे जोटा को हमें जानचे कोन दैट द फेमस अम्ब्रेला एक्ट को एक्ट बोली जानिछे ना अम्ब्रेला एक्ट दैट वाज एनैक्टेड अंडर द आर्टिकल पछाडीबो मन रखंतु याको हमें को एक्ट बोली मन रखिचे ना अंडर द अम्ब्रेला एक्ट एंड जदी एठी पछारला को आर्टिकल हमें याको यूज करछे की कहि परिबो क्विक आर्टिकल केते नंबर हमें यूज करिबा रिलेट करि परिबा ना 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 253 of the Indian Constitution to protect and improve the environmental quality in the wake of 1984 Bhopal gas tragedy pore apanकर ए जिंसटा कंसीडर करा गला तेनु आपण मान रिलेट करि परिबे 1984 रे क्वेश्चन आपण आसीबो द भोपाल गैस ट्रेजेडी ओके केबे हैला ना 1984 रे हैला आफ्टर दैट मिसरियस ट्रेजेडी ता परे जाय कि चेता पसिला कोन गवर्नमेंट रो आफ्टर दैट 86 रे आपनकर कोन हैला ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपनकर द अम्ब्रेला एक्ट आपनकर पास हेथिला एग्जैक्टली 19 डिसेंबर 2-3 राति रे आपनकर 1984 इंसिडेंट हेथिला भोपाल रे क्लियर जदि हम पछाडीबा 1981 रे आपनकर किछि जिंस हेथिला कि देखो प्रिवेंशन ऑन द कंट्रोल कोन ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन ऊपर आपनकर कोन ना इंडिया रे गोटे चर्चा चलीला जहा ऊपर आपनकर नै कि 1986 पर्यंत लागि गला एक्ट आपनकर पास हेबा लागि एग्जैक्टली 1981 ईयर तक हमें चिलिका नेशनल आपनकर चिलिका रामसर साइट रे केवलाडियो रामसर साइट ऐड हेतिला द फर्स्ट कोन इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन द रामसर सॉरी ईरान रो रामसर साइट रे सेति लागि आपन मन तक मन रख परिबे राइट तापर 1987 रे हमें कहा साथ रिलेट कर परिबा जति हमें जानि छे 1987 ईयर को 1981 हेला अच्छा आपनकर जो हेतिला हमर नळपण बर्ड सेंचुरी कोन कहितिली ना एज अ चिलिका रामसर साइट 1981 हेला 1987 रे आपनकर कोन हेला ना 87 पचारुची छुआ 1987 कथा कहूची नळपण बर्ड सेंचुरी आपनकर आज ए बर्ड सेंचुरी एस्टैब्लिश हेची कोथिरे ना रिलेट करैबो क्वेश्चन आपनकर कोठु भी पचारि परिबो एंती नाइ कि हमें डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करूचे सो दैट इजी क्वेश्चन रखो हमें ग्रांटेड नै कि मने पकेबानी मझिरे मझिरे हम ताकू भी रिवाइज करके आगु जिबा ना हो ना चलो 1978 रे आपण माने मन रख परिबे काना आपनकर 1974 रे वाटर एक्ट पास हेथिला ता परे 1978 ईयर ताकू भी आपण मान मन रख परिबे आपण क्वेश्चन आसीबो इंडिया रे आपनकर वाटर एक्ट केबे पास हेथिला वाटर एक्ट जेमिति आपनकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपनकर 1986 रे हम कहूचे समिति वाटर एक्ट आपनकर 1974 रे गाइस पास हेथिला हैला तो कोडा आपण माने रिलेट करे कि मन रखिबे हां ब्रुकलैंड रिपोर्ट आपनकर आसीतिला 1987 रे राइट तो जेति के आपण माने मन रखि पारिबे मैक्स टू मैक्स ईयर वाइज गाइस इंसिडेंट गुडा को इवेंट गुडा को टिके ट्राई करिवे मन रखिया पय हैना हां 1978 रे आपनकर वाटर एक्ट नाइ रे छुआ 1974 रे आपनकर वाटर एक्ट आसीतिला ना 74 रे वाटर एक्ट आसीतिला बिराजिनी तोपो ता परे जाकि 1978 ईयर टाकू कहूची ताको रिलेट करेबो बोली माने सेमति किछ इंपोर्टेंट 1978 रे नाही 1974 रे सॉरी 47 लिखि देछि कि उप्स भारी मिस्टेक गलती से मिस्टेक है ना यस 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 चलो नेक्स्ट देखो सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपनकर अंडर आर्टिकल 253 and passed in March 1986 it came into force on 9 November 1986 is had 26 sections and 4 chapters and the Environment Protection Act was enacted in 1986 was never amended okay next question kon kochi now which is the international treaty that is made to protect the ozone layer for the sea,
OIFC कोन कहछि ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मानक पई गोटे इंटरनल ट्रीटी एनैक्टेड हेछि गोटे किछि रूल आपनकर बाउंड्री सेट हेछि कि केति के मात्रा रे हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करि परिबा दैट विल नॉट हार्मफुल फॉर आवर ozone layer depletion that will not indirectly that will not lead to the ozone layer depletion. That means आपनकर कोन हमर रेफ्रिजरेटर हैला आपनकर कूलिंग एजेंट्स आपनकर एसी हैला ए मानकर हमें यूजेस को गोटे रेस्ट्रिक्ट करिबा या फिर गोटे लिमिट सेट करिबा राइट. तो मते कहिलो यार राइट आंसर कोन हबो वेरी गुड की कहला मॉन्ट्रियल वीना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जिबा एबे ताले गोटे रिवीजन करि देबा ताहाले मते कहि दियो पेरिस एग्रीमेंट आपनकर कोन हेतिला एंड दैट रिलेटेड टू व्हाट को Now, Paris Agreement is an international climate treaty जोटा कि adopted करा जाइतिला 2015 रे and legally कोथि पई ना लिमिट सेट करिबा लागि ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो आपनकर सब बेले क्वेश्चन पचारिबो 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 2 डिग्री सेल्सियस छुआ कोन ना पेरिस एग्रीमेंट देन पचारिबा आपनको ए जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल अच्छा कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपनकर कोन हबो के कहबो क्विक हां फ्रांस रे आपनकर हेतिला कॉप 21 रे हेतिला वेरी गुड सिंचेन मते कहि दिया टिके हां एठी लिखि भी दियो कोठी हेतिला आपनकर ना फ्रांस रे हेतिला ओके मते कोंतु जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपनकर होइछि दिस इज अगेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बट that govern आपनकर बायो सेफ्टी को नै कि आपनकर बायो सेफ्टी पैरामीटर्स माने को नै कि पैरामीटर्स का कंसर्न नै कि आपनकर कोन ना ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स माने को नै कि आपनकर कोन हेतिला ना कार्टेजेना प्रोटोकॉल जदि आपनको पचाला व्हाट इज द कार्टेजेना प्रोटोकॉल और टेल मी द प्रोटोकॉल नेम दैट इज लीडिंग विथ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कोन ना लिविंग modified organisms right एमानु को नै कि आपनकर कोन ना 2000 मसिया रे हेतिला आफ्टर दैट नोगोया प्रोटोकॉल के कहयो मते द लोगोया प्रोटोकॉल अगेन ता आपनकर गोटे कोन लीगल फ्रेमवर्क हेतिबो ई आपनकर कहा ऊपर टारगेट करे ना केते की बेनिफिट शेयरिंग आपनकर हेला तो access of benefit the access and benefit sharing आपण माने याकू कोन शॉर्टकट रे ABS नारे मन रखि पारिबे access and benefit sharing regarding what na regarding the fair utilization of global genetic resources आपनकर ग्लोबली जेति की जेनेटिक रिसोर्स रही छि ग्लोबली जेति की जेनेटिक रिसोर्सेस रही छि गाइस तो एमान को नै कि सेट करि छि बाउंड्री के ना नोगोया प्रोटोकॉल मन रखि परिबा आपनकर कोथि पाई रीजन ता आपनकर जानिबा निहाती दरकार हैला बाकी या विषय आपनकर सब लेखाइ छि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपनकर यूएनईपी आपनकर अंडर रे जाउथला यूएनईपी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड दिस इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड हितला केबे ना 1987 हैला नेक्स्ट को मते ना व्हेन डिड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इंडिया रे आपनकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे आसीथिला के मते कहबा जल्दी When did the Indian Wildlife Protection Act came into force in India? In the year 19. Quickly कहि दियो केबे हेतला 62 रे बिल्कुल नहीं 62 रे नहीं that year हमें कहि परिबा that saw the establishment of animal welfare board आपनकर इंडिया रे हेतिला but crucially अपन कहि परिबा that prevention about the laws विषय आपनकर 1962 that is not important for the exam perspective देखो 1972 को मन रखो केबे ना 1972 को हमें माने मने रखुचे द लैंडमार्क of legislation came into force to ensure the legal protection of the wild animals 1972 रे हेतिला 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर वेरी गुड नितेश कोन 1972 रे ये हैला देन आपण मान को घोषैथिली 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर गोटे वर्ष गैप दे दियो 1975 रे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ए सब हेतिला ना हन में देखो नेक्स्ट चलो सो राइट आंसर आपण कर केबे 1972 सितंबर 9 तारिख रे ये एस्टैब्लिश हेछ नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो देन को द वीना कन्वेंशन इज रिलेटेड एबे ही कहितिलो तो वीना को हमें कहा साथ रिलेट करि परिबा ना कहि छी तो वाइल्ड लाइफ ऊपर आपण कर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ता माने ग्लोबली आको किए दिस वाज ग्लोबली गवर्नड बाय साइट्स तो मते के कहि परिबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द साइट्स के मते कहि परिबो व्हाट डू यू मीन बाय द साइट्स क्विक साइट्स ऑफ फुल फॉर्म मते कुहो जहा को आपनकर कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जेमिति आपनकर सेम
द बिना कन्वेंशन आपनकर प्रोटेक्शन करूची ओजोन लेयर को सेमिति साइट्स आपनकर प्रोटेक्ट करूची ऑल द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ताहाले मते कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द साइट्स जल्दी हु कैन से साइट्स फ्लोरा एंड फौना 1975 यस मते कोन नेक्स्ट yes that is the convention of international endangered species कारण एठी आपण माने को वाइल्ड लाइफ कथा कहिची ता माने सेथिरे आपनकर all the endangered species आपनकर कोन इंक्लूडेड हेबे एडेड आपनकर हेबे क्लियर एते की जिंस नेक्स्ट चला जदि आपन को डिस्पोजिंग ऑफ द हार्मल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कथा पचाउची याकू तो की गुटे रेगुलेट करूथबो ना ये आपनकर गुटे इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी अछि जे कि एटाकू आपनकर रेगुलेट करूची अंडर द बासेल कन्वेंशन गाइस बासेल कन्वेंशन कथा आपन को क्वेश्चन ने पछारिबो ना ताहाले माने रखंतु के बासेल कन्वेंशन आपन को रेगुलेट करूची ऑल द हार्मफुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट माननकु मन रख परिबे द सुइटेबल एग्रीकल्चर आपन को जदी क्वेश्चन ने पछारुची ता सॉरी सुइटेबल को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहूची माने हमें कोन कहिबा ना याकू भी के ग्लोबली मैनेज करथुबो ता माने कोन जो आपनकर FAO अछि के मतार फुल फॉर्म कहि परिबो जल्दी ए जो FAO अछि ना छुआ त मते के कहबो त FAO रो फुल फॉर्म कोठी माने फुल फॉर्म कोन एंड यार हेडक्वार्टर कोठी जल्दी द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हना नहीं कोठी हेडक्वार्टर रोम इटली रे तार हेडक्वार्टर आपनकर अछि ताले फुल फॉर्म भी आपन माने समस्त कोन ना मने रखंतु हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर द वेना 1985 रे आपनकर कोन प्रोटेक्शन एक्ट अडॉप्ट करा जाइथिला नेक्स्ट मते कहि दियो इंडिया रा फर्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कथा में कहूचे तो रिलीज द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कोठी आपनकर निजे भाबंतु किछि आपन जानि नांदी व्हाट आर यू लर्निंग हियर बस माइंड रे गुड रखंतु कि अधिक जोटी पोल्यूशन ऊपर ओरिडनेस थिबो सेठी आपनकर एभला प्लान को इंप्लीमेंट कराजिवो ता माने आपनकर कोठी हबो यस को जगह रे हबो ना दिल्ली रे हबो दैट मीन्स हमें कहि परिबा उत्तराखंड हेला उत्तराखंड से आपण मान को बहुत सारा जिंस मन रखैतिली माउंटेन पैसेज to आरंभ करी रिवर एक्सेट्रा बट स्टिल गाइस मन रखंतु हरियाणा को आपण माने कोन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कोन तार हेडक्वार्टर सहित रिलेट करै के मन रख पाबे बाकी दिल्ली सहित आपण माने मन रखंतु ओके द यूनियन टेरिटरी वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली फॉर्मुलेट करिथिला कोन ना रोल आउट करिथिला द कम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल एक्शन प्लान एंड आपनकर कोन SAPCC ता फुल फॉर्म मते के कहि परिबो त स्टेट ना मु कहबी त माने को द SAPCC गाइस यारा फुल फॉर्म आपन को पछातो मते को व्हाट डू यू मीन बाय द SAPCC हां IS रा बी हेडक्वार्टर राइट के मते कहि परिबो गूगल त मार दबो सब SAPCC कोन कहूची ना स्टेट लेवल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज कोन स्टेट लेवल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज वेरी गुड ओडिसा हले आपण मान जानि संती आ कोन हम कोथरे सबुट अधिक हाईएस्ट हम कोथरे मैनेज करिबा रे जति आपनकर डिजास्टर रहिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमर हाई नेक्स्ट चलो so right answer आपनकर NFACC that was released on 30th June 2008 and it was released address the future policies and program of the climate mitigations and NFACC run through 2017 and direct ministries to submit a detailed implementation plan clear next चलो अच्छा एटा गुड दिन दिल्ली वाज द फर्स्ट स्टेट रिलीज हेतला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान गाइस 2008 रे बोली भलो से मन रखंतु 22 जून 2010 रे आपनकर 6 टा स्टेट सबमिट करितले दे आर ड्राफ्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज जोठी आपनकर मोस्ट पोल्यूशन क्रिएट हुए ओके नेक्स्ट मते कोंदु 11 नंबर कोन कहिची ना इन व्हिच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड फास्ट आपनकर कोन हबो मते कोंदु जल्दी आगो आपनकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे आसीगला तापर आपनकर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 रे आसीगला इवन 75 रे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी आसीगला ए सब जिंस आसीला पर ताका माइंड को आसीला अरे हमें सब जिंस करूछ जे एमानो को प्रोटेक्शन दबा के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन दबा तो आकु हमें आगो दियंतु सेथि लागि 1972 गला 73 गला 75 गला माइंड रे गवर्नमेंट रे पसिला कोन ना फास्ट हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करिवा लागि गोटे एक्ट आनिया सेथि लागि 1980 मसिया रे लेट बट नॉट द लीस्ट हमें कहि परिबा 1980 रे आपनकर कोन ना आसी गला द फॉरेस्ट एक्ट जोटा हमें कहि परछे द पीरियड
That's all the Forest Conservation Act आपनकर enacted हितला 1986 रे आपनकर Environment Protection Act आसीथिला हां Environment Protection Act clear next चला को year रे कहले गाइस मन रखिबो मसिया आपनकर दे देथिबो सॉरी डेट सहित 25th December actually आपनकर 25th guys sorry December नहीं October 25th October 1980 आपनकर ये Forest Conservation Act pass हेतिला to provide a conservation of forest and the for matters connected there with the ancillary for incidental thereto okay next मते कहि दियो ना एबे कहिला तो जो साइट्स कथा आपण माने को कहिली कोन कहली ना साइट्स तो मते कोइ जो साइट्स आपण माने को कहिची ताकू रिलेटेड क्वेश्चन ना साइट्स is an international treaty on what ये आपनकर एयर पोल्यूशन को नै कि आपनकर किछि अछि कि एयर पोल्यूशन को नै कि आपनकर गोटे एक्ट अछि जहा को हमें कोन कि 1979 एटा एनेक्टेड हेतिला जोटा कि इंटरनेशनल एक्ट जोटा कि ना कोन होछि ना CL आर माने पड़नी गाइस CLR TRP CLR तापर टैप थिला ना टैप CLR TAP एरा फुल फॉर्म दे चेक कर दबा क्लियर टैप हां CLR TAP देन वाटर पोल्यूशन पय आपण माने ऑलरेडी जानि छंती कोन मार्पोल कन्वेंशन आपण कर जदी वाटर पोल्यूशन को नै कि आपण कर किछि आसिला ताहाले मन रखो दैट इज द मार्पोल कन्वेंशन देन आपण कर कंजर्वेशन ऑफ एंडेजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपण कर कोथि आसी जिवो ना साइड से पडस क्लियर चलो नेक्स्ट मते कहि दियंतु the greenhouse effect is enhanced in the environmental due to greenhouse gases आपनकर enhanced अछंती कोथरे ना environment due to what greenhouse effect is enhanced in the environment due to quick carbon dioxide आउ कोथि पई हबो ना carbon dioxide पई हबो carbon monoxide is a very toxic compound हमें जानि छे जोटा कि आपनकर कोन indirect atmospheric माने डिफरेंट प्रकार के एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री से हम ताको रिलेट करू छे किंतु कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर कोन दैट इज ऑब्वियसली मोर इटा नेचुरल भी आपनकर एंड एंथ्रोपोजेनिक भी सो रिलेट करे बारे कोन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मिसई के आपनकर मैन मेड क्लाइमेट वार्मिंग आपनकर रिलेट करेबो so this is the carbon dioxide is one of the most significant greenhouse gases primarily produced by the burning of the fossil fuels next mate ko which one of the following gases is not a greenhouse gases या भितर आपनकर कोटा greenhouse gases नुह छुआ quick which of the following is not a greenhouse gases आपन को पचारि छी म आपन को greenhouse gases सब कहि देई छी बट मते कहंतु कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोन ना फंडामेंटल रेफरेंस फॉर द ग्रीनहाउस गैसेस किंतु ए जो मीथेन कहि छी डेफिनेटली मीथेन भी आपन को नाइट्रस ऑक्साइड कहि छी किंतु ऑक्सीजन आपन को केबे हबो कि मते कहंतु जो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन कंपाउंड आपन को एठी लिखी सी दिस इज अ स्ट्रक्चरल एटमॉस्फेरिक गैस जदि हमें ताकू कोन ना डाई को ट्राई करि देबा ताहाले आपन को ओजोन लेयर को रिप्रेजेंट करबो हैला नेक्स्ट म देखो सो राइट हैला ओजोन आपन को 10.2% मीथेन आपन को 16.3% कार्बन डाइऑक्साइड 50 किंतु एठी ओजोन कथा लिखि छी जो एटा आपन को केते O3 ओके मन हेबो त यस मते कोंदु N2 लेखा है ना बाबा NO2 लेखा है NO2 लेखा है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन केमती होंदा कि नाइट्रोजन आपनकर सबुठु अधिक परिमाण रे कोन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अछि से जदि आपनकर ग्रीन हाउस गैसेस हे जिवो ताहाले तो सरी गला काम खत्म जैथि ना कि आसो देन आपन कहै छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ कोटा को हमें कहि परिबा दैट हैज अ हायर आपनकर कोन हां एनर्जी लेवल्स बट शॉर्टर होची वेवलेंथ कहा को हमें रिलेट करेबा की कहबो वेरी गुड अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को हमें रिलेट करेबा दैट हैज द हायर एनर्जी लेवल शॉर्टर वेवलेंथ जदि कहता ना शॉर्टर एनर्जी लेवल हायर वेवलेंथ जदि ताको ऑपोजिट कर देथा ताहाले आपण माने कोन रिलेट करथांती जदि ताको उल्टेई दबो ताहाले आपण माने कोन रिलेट करि परिबे मते कोन क्विक उल्टेई देले आपण माने कोन रिलेट करिवे इंफ्रारेड को करिवे या फिर आउ किछि को करिवे मते कोंतु यस चंद्रशेखर उल्टेई देबे जदि ताको आपण माने इंफ्रारेड करि देबे यस आपनकर जदि लिस्ट पचारिबो ताहाले याकु नेबे जदि लो आपनकर कोन हाई पचारछि ताहाले आपण माने इंफ्रारेड को नेसी ठीक अछि एंड बेटा रेडिएशन आपनकर लीड करिबो दिस इज अ पार्टिकुलेट माने कोन पार्टिकुलेट अंडर द आयोनाइजेशन प्रोसेस रे आसी हैला नेक्स्ट मते कोंतु सो राइट हैला अल्ट्रावायोलेट मते कोंतु नेक्स्ट द चेर्नोबिल एक्सीडेंट is related to ए जो चेर्नोबिल एक्सीडेंट आपनकर हेथिला वेरी गुड इवनिंग मिनती कोंतु मते
जो चेर्नोबिल एक्सीडेंट हेइथिला एटा आपनकर दिस इज अ टाइप ऑफ को टाइप रो एक्सीडेंट कि आपण माने जानछन आपण मानक भितर को दिस इज नॉट एट ऑल earthquake not a flood not a acid rain एटा आपनकर कोन ना काइंड ऑफ न्यूक्लियर कोन ना एक्सीडेंट आपनकर 1986 रे हेइथिला चेर्नोबिल पावर प्लांट कोठी ना यूक्रेन रे 1986 रे मन रखंतु पावर प्लांट रे आपनकर कोन ना केमिकल रिएक्शन हे कि फायर लागि जाइथिला तो एटा आपनकर यूक्रेन रो गोटे इंसिडेंट देखंतु so the Chernobyl disaster was a nuclear accident that took place on 26th of April 1986 in Ukraine. Due to the deadly radioactive effect, many people lost their lives. Importantly, decomposing radioactive nuclides cause the radioactive pollution. It harms the organisms and affect their genetic properties. Even the India initiative kon rahichi na AERB, that is the Atomic Energy Regulatory Board amara stabilized heichi. Convention on early notification on a nuclear accident आपनकर कोन हबो ना it is a treaty made in 1986 by the International Atomic Energy Agency द्वारा and it require करूची countries to inform other countries about any nuclear accident that might affect them and convention of the nuclear safety आपनकर it is a legal treaty made in 1994 रे मेंशन करा जाछि right next question कोन तुमते कहिछि the most toxic metal pollutant of automobile exhaust करिवो कहाकू के कहबो the most toxic metal pollutant is automobile pollutant of automobile exhaust करूची कोन क्विक जल्दी आंसर देलो लीड को करूची अरे बा समस्त आंसर जानिछो कैडमियम नाही नरेश लीड कौन हम ना आपनकर लीड देखो so lead is the most toxic metal pollutant in automobile exhaust. It is a heavy metal that's highly toxic and can cause irreversible damage to the human body. And how it kemiti apanakar affect pakae na lead affect the nervous system directly causing to the learning disabilities, high blood pressure and even that can lead to the death also. Okay, next one कहछि in India which act was enacted to provide for the prevention, control and abatement of environmental pollution कौन हमारा राइट आंसर किए मत दबा जल्दी दिया in India guys पचारिसी कि in India which act was enacted को act आपनकर enacted हेथिला काहाकू ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिबाकू प्रिवेंशन देबाकू कोन ना कंट्रोल करिबाकू इवन अबेटमेंट करिबाकू पोल्यूशन कोटा हेथिला क्विक ना the environment protection act आपनकर आसीथिला कारण एयर पोल्यूशन आपनकर एयर को नहीं कि एयर हेले आपनकर एयर को 1981 से रिलेट करि परिबा किंतु एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो द एयर कोन एयर कर देला जे रहिला कोन क्वेश्चन अछि कि हां एनवायरनमेंट को नहीं कि ना एयर हबनी एनवायरनमेंट को नहीं कि गाइस 1986 रे आपनकर भोपाल ट्रेजेडी पर हेतिला एनवायरनमेंट एक्ट को नहीं कि the air prevention and control of pollution act 1981 and the both option तो नहीं एथिरे एथिरे तो both option नहीं ना तेनु गोटे चूज करिवे एटा नहीं एटा बी करिवे एटा को बी कर देबे हैला so the air कहिछि कोन ना prevention and control of pollution act 1981 ने आसीतिला but the environment protection act 1986 रे आसीतिला both act in India that address the environmental pollution किंतु मोर आमे रिलेट करेबा कहा सहित 1986 रे कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी पर एटा सीरियसली आपनकर आसीतिला बी हबो हां बी ही हबो नेक्स्ट मते कोंदु which pollution causes इटाई disease in human being देखंतु इटाई disease आपनकर गोटे water pollution disease that means after water get polluting with that particular chemical आपनकर से disease जते बेले आपण माने water contamination ने आसी जानती से disease आपनको अफेक्ट करे तो राइट आंसर आपनकर कोन हबो यस एठी आपनकर कोन हेजिवो ना कैडमियम pollution कोन हेजिवो कैडमियम pollution जदि आपन को मर्क्यूरी pollution सहित किछि डिजीज रिलेट करे पड़िला ताहाले आपन माने एठी कोन मिनमाटा डिजीज को गाइस रिलेट करे पारिबे कि कोन मर्क्यूरी हेले मिनमाटा वेरी गुड चंद्रशेखर एतिक जिंस आपन माने मन रखंदु अच्छा जदि कहले कि आर्सेनिक आपनकर pollution हैला वाटर सहित ताकू आपन माने गोटे क्रॉनिक डिसऑर्डर सहित रिलेट करे पारिबे कि मते कहि परिबो गोटे आपन माने जानि थांतु ब्लैक फुट डिसऑर्डर कोन ना ब्लैक फुट डिसऑर्डर तो एटा आपनकर कोन जदि आर्सेनिक आपनकर वाटर सहित मिसिला
ताहले आपनकर से डिसऑर्डर टा हेते हैला बाकी नाइट्रेट आपनकर पोल्यूशन हेले टोटल ब्लड को अफेक्ट करे ब्लड आपनकर कोन ब्लड सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बंद करे ब्लॉकिंग करे हैला नेक्स्ट चलन मते कोन सेटा एटा रिलेट करबा नेक्स्ट मते कोन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हमें कोन कहबा जल्दी कहिलो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट हाँ नाइट्रेट पोल्यूशन ने आपनकर ब्लू बेबी सिंड्रोम कहबो जोटा कि आपनकर कोन एटा लिखि परिबे आपन माने एटा लिखि देबे ब्लू बेबी सिंड्रोम जोटा को हमें कहूचे ता डॉक्टर हैंडराइटिंग कर देली आ ना ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपनकर ब्लड सेल को ऑक्सीजन जीवा ब्लॉक कर दिए आफ्टर दैट मते क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हमें आउ को नारे जानि छे वेरी गुड सब तो जानछो त माने काई क्लास करछो त माने वेल अपडेटेड ताको हमें फ्रेयन कहूचे शिव शक्ति जय जगन्नाथ वेरी गुड ओके त हमें ताको कोन कहूचे ना फ्रेयन बोली हमें ताको कहूचे मन रहइबा आपण मानकर पक्का भूलभाल हबनी त द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड कमर्शियल ब्रांड नेम होच तार फ्रेयन एल्स हमें ताको एमते जानछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नेक्स्ट मते which of the following countries is the largest emitter of carbon largest emitter of carbon हमें कहा को कहिबा इट्स ओके शिव एंड शक्ति शिव शक्ति एक्चुअली शिव मैरिज कला पर तमे नाटा देइछो ना शक्ति मैरिज कला पर तमे ना देइछो वेरी कंफ्यूजिंग तमरो नाटा आसो which of the following countries is the largest emitter of carbon हमें कहा को कहिबा क्विक obviously China जोटा मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्रीज हेदिबो ताको हमें कंसीडर करबा हना नै बट आफ्टर चाइना आपनकर कि इंडिया को पड़े आसीबेनी आफ्टर चाइना आपनकर यूएसए एठी पॉपुलेशन काम करबनी आफ्टर चाइना आपनकर सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल इमिटर होची एज ऑफ नाउ आपनकर यूएसए मन रखिबे हैला इंडिया आपनकर थर्ड यूएसए को तले अछि यूएसए हमर कोन सबरो रिकॉर्ड ब्रेक कर देछि इंडिया होची आपनकर थर्ड रे एंड यूरोपियन यूनियन आपनकर छाडी दियंती आपनकर नाही टॉप 5 रे नाही Next मते कोंतु so in 2023 China emitted 11.9 billion metric tons of carbon dioxide बाबूचो त केते metric ton carbon dioxide बाहरुची छाड़ कोन करबा which was the 35% of the world total emission world को हम जति total emission केति की carbon dioxide होची ताको एनकाउंटर करबा out of that 35% एई चला चाइना करूची हैला चलो नेक्स्ट मते which of the following is known as the carbon negative country in the world आसिलो carbon negative कथा कोन कहूची ते मैम यूएसए चाइना रे कंफ्यूज थिली हो एबे क्लियर हे गला त फर्स्ट चाइना सेकंड यूएसए देन हम इंडिया त मते कोन व्हिच कंट्री इज नोन एज द कार्बन नेगेटिव कंट्री हमें कहा को कहि परिबा दैट मींस कोन एठी कहूची कोन कहूची ना आपनकर कार्बन कहि परिबा जदी माने जति की कार्बन आपनकर बाहरुची ताठो अधिक कार्बन कोन माने कार्बन जति की बाहरुची ताठो अधिक कार्बन से कोन एब्जॉर्ब कर दोची कोथि पय जानचंदी ना बिकॉज़ ऑफ द माउंटेनस मिशन एंड हमें कहि परिबा बहुत सारा गच्छ आपनकर पाखा पाखी अछंती सेथि लागि से माने ना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करि नउछन एंड हमें कहि परिबा 60% ऑफ फॉरेस्ट तार प्रेजेंट अछि जे कि एब्जॉर्ब कर नउछि ऑल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट 40% आपनकर ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करछि तो जदि गोटे कहिबार अछि ना गोटे क्लियर गोटे क्लीन ब्रीथ नेबार अछि ना ताहाले छुट्टी रे अलगा को कंट्रीज न जाय कि भूटान जाओ हैला बहुत शांति लागि एटलीस्ट सुस्तर रहि के आसीबो नेक्स्ट माने कोन तो भूटान इज द वर्ल्ड ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री दिस मींस दैट इट एब्जॉर्ब्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट emits हैला नेक्स्ट माने कोन तो ना कोन कहै छी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट ना ग्लोबल वार्मिंग हैप्पीनेस बजट काढे भूटान यस कोन तो मते एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन कोन पचै छी ना कहि छी ऑप्शन कोटा आपनकर राइट हबो सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो ओके फाइन चलो हमें पढि देबा तापर हमें आंसर पाइ छिबा कहै छी बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन सहित हमर किछ रिलेशन अछि की ग्लोबल कम्युनिकेशन माने एटा टेक्नोलॉजिकल टर्म हे गला माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कथा कहू छी जोटा कि एंटायरली आपन टेक्नोलॉजिकल टर्म या को आपण माने एलिमिनेट करो देन कहै छी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर तो ग्लोबल वार्मिंग सहित रिलेट करेबो वार्मिंग पढि गले ग्लेशियर तो मेल्ट हबो ही ना तो ये रिलेटेड then flowering of mango trees before the times definitely जदि गरम आपनकर अधिक होई जिवो ताहाले गछरे तो आंबो माने आंबो जल्दी पाचिबो ना डिपेंड करे क्लाइमेट ऊपर ट्रू द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द हेल्थ तो डेफिनेटली सब जिंस प्रॉपर टाइम रे हेली सब भलो
गोटे संस्कृत श्लोक मोर अधा अधा मन पड़े कही पारनी प्रॉपर टाइम न हेले आपनकर गछरु फल भी पड़े जदि प्रॉपर टाइम हेबा पूर्वर गछरु फल पड़ी गला सेटा हमें कोन ना दैट इज बियॉन्ड और दैट इज द अपोज ऑफ द नेचर सेति लागि एटा आपनकर भी हे गला सो 2 3 4 कोठी ऑप्शन ने नाही ना अच्छी बी अछि कोन हे गला एटा को टॉपिक रे जणा पडुनी ग्लोबल वार्मिंग का ईवीएस रो क्लाइमेट चेंज रो आ को टॉपिक रे जणा पड़ी थांता की को टॉपिक रे जणा पड़ी थांता तमको ऑप्शन बी हे गला राइट आंसर हैला नेक्स्ट देखो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग या भितर मते को कोटा ग्लोबल वार्मिंग रो गोटे इंपैक्ट हबो हैला सो फर्स्ट कोन पचाची ना राइज इन द सी लेवल जदि आपन के ग्लोबल वार्मिंग बढ़िला ताहाले सी लेवल बढ़िबो डेफिनेटली मेल्ट होला ग्लेशियर मन तो सी लेवल बढ़िबो ना ट्रू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स टू ये होच माने ये हबो ये होच माने ये हबो दे हां कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर देन कोच स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस डेफिनेटली आपन करो डिजीज स्प्रेड तो हबो ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुची माने जति एक्वाटिक एनिमल्स अछन से माने मरिबे तो आपन करो कोरल रीफ्स बढ़िबो सो ये आपन कर चारटा जक ऑप्शन मते सैटिस्फाइंग लागुची केतना राइट आंसर 1 2 3 एंड 4 वेरी गुड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दियो सो राइट आंसर आपन कर ऑल ऑफ द एबव मते कहंतु द गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड एंड इज इन्वॉल्वड इन ग्लोबल वार्मिंग इज पैडी फील्ड रो गैस ता आपन कर इमिट होउची एंड ये ग्लोबल वार्मिंग सहित आपन कर कोन इन्वॉल्वड अछि के मते कहि पारिबो के कहि पारिबो वेरी गुड चंद्रशेखर दैट इज द मीथेन कौन कहूची ना मीथेन द हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस जे कि एमिटेड करूची ऑल द अबाउंडेंटली कोन फ्रॉम द वाटर लॉग्ड राइस पैडल्स थ्रू एंड ये आपन करो डेफिनेटली आपन मान जान सब मीथेन लीड करछि का को ना ग्लोबल वार्मिंग को आपन करो लीड करूछि ना ओजोन सहित आपन करो कोरिलेटेड ये अछि ओजोन डिप्लीशन रे भी ये लीड करूछि इंपोर्टेंट रहूछि so right answer आपन करो sorry methane is the gas produced by the paddy fields that contribute to the global warming. But how methane is produced? Methane is produced by microbes in the flooded paddy fields that lack oxygen. These conditions are ideal for the methane emitting bacteria. हैला next मते कोंदु again guys कहूची 1999 होची OPSC ASO रो बैच आपण माने आराम से जॉइन करि पाइबे अनुशासन बैच फॉर OPSC ASO and सहकारी बैच for the junior assistant आपण माने मो कोड SPG10 यूज करि परिबे to get 10% extra discount. चलो next question when was India's first national action plan on climate change release हेतिना जल्दी कोन कहि छी हां भारत मिथेन प्रोड्यूस करूची ताले कोन कहउछ धान गछ लगेबानी आसा मैम आपणक परे को क्लास अछि संघमित्रा मो परे चंदन सरंकर उड़िया क्लास अछि हला देखो मते को व्हेन वाज द इंडियास फर्स्ट इंडिया रा फर्स्ट आपणकर कहितली एनएपीसीसी 2008 रे हेतिला राइट देखो so the national action plan on climate change was launched in 2008 by the prime minister council on the climate change action plan aims at creating awareness among the representation of the public different agencies of the government scientists etc हैला कोन कोन 8टा नेशनल मिशन आपन करथिला फर्स्ट एनएपीसीसी फॉर्म हेतिला these are the 8 missions national solar mission national mission on the enhanced energy efficiency national mission on sustainable habitat national water mission national mission for sustaining the Himalayan ecosystem national mission for a green India national mission for sustainable agriculture national mission on strategic knowledge of for climate change हैला then कहछि the concept of carbon credit originated from अच्छा carbon credit आपन को कहउछि that means this concept आपनकर कोठो originate हेछि के कहबा क्विकली आंसर दियो कोठो आपनकर आसीछि जेते बेले 1997 ने इंटरनेशनल ट्रीटी आपनकर हेतिला सेते बेले फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस करिथिला ए जो कार्बन क्रेडिट कथा आपन माने किए मोर एसो बैच रे अछंती अंक भितरु मते कहि देले जो माने एसो बैच रे अछो से माने आराम से रिलेट करे पाथो फर्स्ट 1997 जेते बेले आपनकर कीटो प्रोटोकॉल हैला ओवर दैट आपनकर फर्स्ट ए कार्बन क्रेडिट नाटा इंट्रोड्यूस हेतिला कोथि पई ना मार्केट बेस्ड कैप एटा गोटे जे कि ट्रेड मेकानिजम्स को शो करूची एंड अलाउ करूची कंट्रीज टू ट्रेड द इमिशंस अलाउंस हो ना द फास्ट ट्रेडिंग पर्पस कार्बन क्रेडिट आपनकर आसी तो कीटो प्रोटोकॉल सहित हम याको रिलेट करूची हैला अर्थ समिट आपनकर रियो हैला आपनकर 1992 रे रियो
मने पडुछि तो UNFCCC नेक्स्ट देखो सो कीटो प्रोटोकॉल आपनकर हेतिला 1990 पड़ गला रे 1997 हैला नेक्स्ट देखो मते देखो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज्ड बाय द कौन हबा राइट आंसर क्विक बायोकेबल सहित आमे कहा को रिलेट करई परिबा द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप कहिची एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा आपनकर ये हबो ओके एशियन डेवलपमेंट बैंक हले आपनकर ओनली एशिया ऊपर एठी जो कहिची द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एटा आपनकर पर्टिकुलर को एरिया कहिबी दैट मींस ग्लोबल कथा कहिची ग्लोबल हेले आपनकर ऑलवेज वर्ल्ड बैंक हम कोन हबो जते बेले ग्लोबल स्तर रे आमे किछि कथा कहूचे दैट ऑलवेज लीड विथ द वर्ल्ड बैंक देन कोन कहिची तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप is a multilateral fund supported by the donor governments and managed by the World Bank. Next one देखो now without the greenhouse effect the average temperature of earth's surface would be एटा भी पढ़े छी आपनकर प्रोटोकॉल जते बेले डिस्कशन चली थिला ओके कंट्रीज मानक भितरे कि जदि आपनकर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट न थांता ताहाले हमर अर्थ सरफेस केति की थांता मते कहि दियो माने ऑन एंड एवरेज सब एरिया हमकु कहिछि अर्थ टेंपरेचर केते थांता के गेस करि परिबो नो गाइस 15 डिग्री नाही अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस केते रहइबो ना without the greenhouse effect the average temperature of the earth surface would be approximately -80 degree celsius माने आपण माने सर्वाइवल कंडीशन में थांते तो काहे न थांते जोटे थाए ना गोटे देह सुआ हे जाय आमे जदी सेति की टेंपरेचर रो लीड करथांते बंचु थांते ताहाले आमे भी बंची करथांते हमर बॉडी भी सेति की सपोर्ट करि पारु था हेजिबा इंग्लिश का सॉरी लानी चंद्रमुखी इंग्लिश क्लास सॉरी लानी तमे लेट अछो How much global energy storage deployment is targeted by 2030 under the global energy storage and grid place? Quoi? Class cancel हेनी almost 1.5 घंटा बळे तमानकर बोते क्लास हैला सारंकर घंटे परे क्लास हेची तो टिके हेवी रेन हैला आ किछि आपनकर कोन हिंदी करंट अप डाउन हैला सेति पय सर क्लास बंद कर 1500 को जाउची हाउ मच ग्लोबल एनर्जी आपन को पचारुछि आपन माने मात्र 1500 ते लेट करछंती जल्दी 2000 अछि ऑप्शन ने चंद्रमुखी कहले 1000 ना ना चंद्रमुखी तमे चंद्रशेखर को फॉलो कर हैला सो राइट आंसर आपन कर 1500 गीगावाट ही हो दैट इज द ऑफिशियल टारगेट एंडोर्स्ड करा जाईछि एट द कॉप 29 मिशन रे केबे करा जाईछि बचाले मन रखो कॉप 29 ने करा जाईछि कमिटिंग करा जाईछि गोटे सिग्नेटरीज ऑफ माने कलेक्टिवली एफर्ट दिया जीवो एंड कलेक्टिवली एक्सपैंड करा जीवो द ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जोटा कि आपनकर 6 फोल्ड बोली हमें कहूचे 6 फोल्डेड ग्लोबल स्टोरेज कैपेसिटी रे आपनकर 1500 गीगावाट बाय केते एटा भी क्वेश्चन आसीबो बाय केते गाइस ना बाय द ईयर 2030 हैला देखो तो रहिला आपनकर कॉप 29 इनसटा मेंशन करा जाईछि एंड एठी 1500 गीगावाट एनर्जी बाय 2030 हैला छुआ चलो नेक्स्ट म देखो ना कहिबो कॉप 29 reached a breakthrough agreement to triple climate finance for developing countries okay triple climate finance for the developing countries तो कौन हबे यार आंसर मते किए दबो क्विक दे दियो कोन कहि छुआ कॉप 29 एग्रीमेंट आपनकर केते मिलियन डॉलर कथा कहिची ना यूएस डॉलर 300 500 चंद्रमुखी नाही तेंती करंतिनी एमती ढाबा मारंतिनी डॉलर कथा बिलियन डॉलर कथा टंके 2 टंका 1000 टंका नुहा हैला सो राइट आंसर होजी 300 बिलियन एनुअली बाय 2035 सुधा आपन को रहिबो दैट मींस द कोर फाइनेंशियल टारगेट हमरो नेगोशिएटेड हेजी अंडर द कोन ना बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट कॉप 29 ही जिनसटा हेतिला रिकॉर्ड करा जाईची 2035 सुधा हैला ठीक अछि जयराम लेटर आसीगला हो नेक्स्ट देखो as per the 2022 NDC update कथा कहिछि ओके now what is India's new target for non fossil fuel capacity by 2030 कहि रखुची जेते की क्वेश्चन आज क्लास रे अछि एई क्लास रूम पांचटा क्वेश्चंस तम मानकर CGL मेंस रे थुआ ऑलरेडी पड़ी गय अछि हैला मते पूरा क्वेश्चन आगुआ मिलिथिला म तम मानकर सहित शेयर कोनी ता भितरे गोळे मिसे की पांचटा क्वेश्चन मात्र आनिछि पुनी लिखे गले मो ऊपर केसे जिवो ना सेथिला तो जो माने मिस करूचंदी से मानकर लॉस
ना 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 45% नहीं 50%। 45 नहीं रे बाबा 50%। एनडीसी कौन कहूँ कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कौन हम सो राइट आंसर आपनकर केते हबो ना ऑलमोस्ट 50%। सी ना नॉन कौन कौन रही से मन रखु इमिशन ऑफ द इंटेंसिटी रिडक्शन केते रही टारगेट 2015 सॉरी हाँ 2015 सुधा 30 to 35% थिला एंड 2022 सुधा आपनकर 45% किंतु नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी आपनकर केते ना अचीव करिछि 50% जोटा कि आपनकर सेम एज द अर्लियर जेति कि प्रीवियसली थिला सेटा आपनकर कोन नेक्स्ट कार्बन सिंक पर्यंत भी सेम हिची तो आपनकर 2022 माने 22 सहित रिलेट करछि ना ताहाले मन रखियो 50% सहित हैला ठीक अछि तो क्वेश्चन लीक करि देले मैम हां मु कहूची देखो As part of its climate action plan, India aims to reduce total projected carbon emission by how much by 2030? एबे पा कहिली देखिया कहिला केते परसेंट जल्दी मैम स्पंदन मॉक रे केतेटा मॉक आसीबो स्पंदन मॉक रे मेंस रो 15टा हमर ओटा सेट कर देछि बुझिलो जे कोनोसी मॉक आपण माने नेबे 15टा रहिबो कोथिरे गोटे दीटा बोधे फ्री दियंती गोटे सेट बोधे फ्री हुए जोटा कि समस्त चेक करि परिबे द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बाकी सब आपणकर पेड पैसा रे भाई पैसा दरकार पैसा अच्छा राइट आंसर आपणकर कोन हेसिबो ना 1 बिलियन टन्स तो द सिग्निफिकेंट माइटिगेशन बेंचमार्क अनाउंस करिछि आपणकर केते ना अंडर द पंचामृत स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजी एटा भी क्वेश्चन आपणकर आसीबो जे पंचामृत देखो So about Panchamrit goals of India climate action COP26 Glasgow, the reach of 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030, 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030 and reduction of the total projected carbon emission by 1 billion tons from now to 2030. इस सब क्वेश्चन गोटे गोटे लाइन तमनकर गोटे गोटे क्वेश्चन कहली ना जहां भी क्वेश्चन आछो सब एक क्लास कहूकी रखुची मिनिमम 5टा तमनको टारगेट देछि मिनिमम 5टा हैला देखो नेक्स्ट को व्हाट इज द नेट जीरो एमिशंस टारगेट हियर सेट बाय इंडिया अंडर द पंचामृत गोल आसो केते हबो आस्तिला देखो देखो एतो हेनी केछि देखो आगो को कोन होछि देखो आगो को कोन होछि बुझिला ओ वेट एंड वॉच केते क्वेश्चंस आसीबो तापरे एबे पढि दियो नेक्स्ट टाइम थैंक यू कहबो एबे कोन माने केते ओवर कॉन्फिडेंट र सहित मु कहूछि मैं भाबुथो ना मैम एते ओवर कॉन्फिडेंट सहित कहउछन जदी क्वेश्चन न आसला ताहाले ए क्लास रु क्लिप काटी के मते ट्रोल करिवो किंतु सेमती हबो ही नाही कारण मु क्वेश्चन ऑलरेडी देखि देछि आसो हाउ देखो देखो एटा मो निजर अलंकार को अलंकार लगेली कोन गधस्थल मते ही ट्रोल करियो आ काह करियो कि तो राइट आंसर कोन हे जिवो 2070 आंसर डी ओके 2070 सहित रिलेट करिवो कॉप 26 बाय द लाइक व्हिच इंडिया प्रॉमिस करिछि कंप्लीटली आपनकर बैलेंस करिवो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हैला रीच करिवो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 50 ए जोटा लाइन 5टा जाक पॉइंट इंपोर्टेंट मन रखंतु 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट करिवो फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 रिडक्शन करिवो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम 2030 reduction of the carbon intensity of economy by 45% by 2030 over 2005 levels and achieving the target of net zero emission by 2070 मन रहिला सबुतिक क्वेश्चन next देखो by what percent does the declaration aim to reduce the methane emission by 2050 आसो पुन 2050 70 बहुत मन रखले बे 2050 सुधा कहलो केति के हमर कोन ना मिथेन से रिलेट करबा 35% हां और डी बढ़ा लेवल अप करो 45% नो 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 लेवल अप केते
55% आपनकर रहिबो दैट वाज द ऑफिशियल साइंस आपन कोन कहि परिबा बैक टू टारगेट हम कहि परिबा स्टेट करछन्ती कॉप 29 ए जिंस भी आपनकर डिक्लेरेशन हिची कोथरे रिड्यूसिंग ऑफ द मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट आपनकर याकु भी 55% रिड्यूस करियो बोली कॉप 29 ने एंड सेथिरे आपनकर अलाइनिंग हेची विथ द आईपीसीसी 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे आल्सो हैला देखो सो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला ना ऑप्शन सी कितने 55% by 2050 है ना नेक्स्ट आसो which country is the largest emitter of methane from oil and gas operations and mark my word Chandrasekhar is now on his graduation समान को भले ग्रेजुएशन सॉरी माने भाबो ग्रेजुएशन सरला परे डायरेक्ट गोटे जॉब धरि से आसलो देखो तो मते कोन which country को कंट्री कथा कहिछि कि largest emitter of the methane from oil and gas corporation कौन हम गैस ऑपरेशन यूएसए अरे वाह चंद्रशेखर घोसी आसी कौन करिछ पानी करिके बाटी देछ बुझिलो सो राइट आंसर आपन करो द ग्लोबल लीडर इन द मीथेन दैट लीकेज विथ द फ्लेयरिंग इमिशंस जोटा की कमिंग बेनिफिशियली स्पेशली फ्रॉम द कोटू ना आपन करो एक्सटेंसिव कमर्शियल ऑयल हैला नेक्स्ट देखो सो द यूनाइटेड स्टेट्स आपन करो लार्जेस्ट एमिटर नेक्स्ट वाला कोइ आफ्टर दैट आपन करो कोन कहबे देखंतु रशिया हैला oil gas operations closely followed by the Russia. Next mate kondu which organization releases the global methane tracker annually global methane tracker आपनकर annually से release करूछि किए हबो मते की कहिबो जल्दी internationally जल्दी आंसर दे दियो the international energy agency जे कि कंपाइल करूछि release of the derivative data of tracking the worldwide energy sector आपनकर केति की रहउची सेथरु केति की एक्सट्रैक्शन होउची लीक केति की रहउची एंड आपनकर केति की अबेंडमेंट ऑपरेशंस पय भी यूज होउची तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी साथ रिलेट देखो तो ऑप्शन सी emitted about 2.2 million tons of methane and from the coal mines in 2025 हैला नेक्स्ट चलो वीडियो पुणी लाग हैला कहार सब लाग गेला वीडियो पुणी कौन करी वर्षा रे टिके 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 एमती होउची आ टिके तमे आने एडजस्ट कर दियो क्लियर अछि ना देखो मते को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म द सीबीएएम कथा कहिची ओके एडी क्वेश्चन आपन को कोन पचाछि ना द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म is a part of which EU legislative framework तो कहार हम मते के कहि परिबो क्विकली कहि दियो यूरोपियन यूनियन रो गोटे ये फ्रेमवर्क बट केते नंबर द 55 in 2030 पैकेज केतला आंसर देचो सी पेरिस माने मन इच्छा ओटे मरा जाउछि मन इच्छा मरा जाउछि देखो so right answer आपनकर सी introduced by the European Unions in 2023 propose era purpose कोन थिला ना प्रिवेंट करिवाकू कार्बन लीकेज where industries move to regions with weaker environmental standards to avoid the emissions regulations encourage करिबो cleaner production practices globally target करूची को goods मानकू ना taxes that apply to import with significant carbon emissions including the steel cement aluminium with the energy intensive goods okay हाँ वेदर खराब सबुआडे मु भी कोन करि पारि मते कहूना आसो मते को व्हाट इज द प्राइमरी वार्निंग इशूड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन 2000 in its 2025 off target report तो कौन हमारा राइट आंसर क्विक कौन हमारा राइट आंसर जल्दी बी लागुची आंसर जना नाही बीटा लागुची तमको कोन हबो ना करंट पॉलिसीज पुट द वर्ल्ड ऑन ट्रैक फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.8% sorry 2.8 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2100 सहित में रिलेट करेबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो राइट आंसर आपन को हे गला काहे कि ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज इट्स एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 टाइटल्ड ऑफ टारगेट देखि केते टारगेट ना 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट गाइस सब गुडा गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन रखंतु आपन को एनडीसी कोन पछारिबो दैट इज द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस नेक्स्ट मते को वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी लोकेटेड हेडक्वार्टर आपन को पछारि देछि कोठी
किए मते कहबो वेयर इज द हेडक्वार्टर गाइस एक्चुअली रे जल्दी कोठी आपनकर हेडक्वार्टर अछि किए मते कहबो आंसर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट अरे ठीक तो अछि पुणी कोन घुरिला कहउछ जे उफ, प्रभु आसिला घुरिला गाइस क्लियर आई अछि एमती होउछि ठीक है तो ओके नाउ क्लियर ओके देखो सो कौन कहउछ आपनकर वेयर इज द हेडक्वार्टर आपनकर कोठी अछि के रिलेट करेबो ऑब्वियसली आपण माने देखि कोन मारछ आंसर यार आंसर की देइ दिलो त माने कोन देखि देइथिला आंसर सब उडी गला सब ऊपर को चली गला सेति लागि आउ थरे आंसर दियो को कोन हबा राइट आंसर सुदर्शन चक्र भली घुरुछि हो यार आंसर दियो ऑप्शन ए वेरी गुड कोन हबो ना केन्या केन्या कहले आपनकर नाइरोबी सहित हम रिलेट करिबा द कैपिटल सिटी ऑफ द केन्या इज द नाइरोबी मन रहइबा त आपनकर चल नेक्स्ट सो राइट आंसर आपन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपनकर एस्टैब्लिश हेतला 1972 केबे आपनकर अरे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 रे आसिलानी की सेई वर्ष भी आपनकर यूएनईपी एस्टैब्लिश हेछि रिलेट करी करी दिचिन गोटे ईयर रे कोन कोन इवेंट हेछि मन रख देले गोटे थरा घोषि दबो तमे तो से फॉरेन हो सो रहिला कोठी केन्या नेक्स्ट मते कोंतु ना द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ये ग्लोबल जीडीपी रो केते हबो के मते कहबो जोटा आपन को पछाची एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अचीविंग नेट जीरो कोन estimated cost of achieving net zero by 2050 is approximately kete percent 2% kete percent 2% छुआ 2% 1 हबो नाही नितेश चंद्रशेखर तमे भूल केमती कर देलो तमे केमती भूल कर देलो जे मो नाक कटी गला देखो एं तमे कोन ठीक है मु भूली गली की ओप सॉरी 1% 1% कौन चंद्रशेखर केमती भूलेला माने कॉन्फिडेंस देखुछ को लेवल देखुछ तो देखो सॉरी so developed करूची countries have per capita emissions about 3 times the global average 6.6 time the carbon dioxide effect over the world while India African Union and this सब country आपनकर 1% global GDP को donate करूची right Chandrasekhar Google right okay fine see Oji, what is the projected annual adaptation finance need for developing countries by 2035 before adjusting for the inflation? ये पर्यंत आपनकर inflation रे adjust हेइनी से पर्यंत what are the annual adaptation finance आपनकर केते रहइबो के मते कहइबो एटा दियो हमें चंद्रशेखर को फॉलो करिबु आ जदिना चंद्रशेखर ऑफ टू द क्लास अछंदी से दिन फोन करियो आंसर चंद्राबू आंसर दियंतु चंद्राबू आंसर दियंतु तमन सब भूल भाल दवा मु जान चलेनी मला मनस दियो राइट आंसर आपनकर कोन होची मते त लागुची यूएसडी 440 किंतु मते लागुची कोडी ना यूएसडी 310 हबो बोली देखिया कोन सब मारुचो यूएसबी 310 आपनकर यूएनडीपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के प्रोवाइड करूची की तो राइट आंसर आपनकर ए हबो what are the keys highlighting of the adaptation gap report आपनकर 2025 rising the adaptation finance needs developing the countries will require the USD 365 billion annually by 2035 for the climate adaptations मन रहिबति की मन रहिस गोसे जी की गोटे मार देला डी सेमति दे देछो हैला मैम सेमति चैलेंज करिवेनी कली चैलेंज सब आंसर दियो ठीक ठाक देखिबा आसा by what percentage does the Glasgow climate pact aim to reduce the methane emissions by 2030 कौन हबा देखा कहला Glasgow quick नितेश ओपन चैलेंज आंसर दियो यार जदी आंसर देला मु जानिबी कि नितेश ही सबटू बेस्ट पाठ पढुची एंड इवन ऑल कैन फॉलो नितेश भूल भाल मारिबा नाही तमे मिति सबटू लास्ट जदी देखि देखि आंसर दो तम सते खेलिबी होला खेल शेष जदी की चलो बाय बाय तो देखो कौन होची 2010 सुधा आपनकर 30% रोज 30 ना यस तो रहिला ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर राइज विल लाइकली एक्सीड करची 2.6% बाय आपनकर 2100 सुधा आपनकर कोन कॉन्फ़िगरेशन करा देछि राइट सेमिति हबनी खेल बंद चलो नेक्स्ट मते को इंडिया रैंकिंग इन द क्लाइमेट चेंज
परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 केते हबो क्विक इंडिया रो रैंक आपनकर CCPI सहित केते अछि गधस्थल आंसर दियो मोर तो तमने मझिरे मझिरे तमे मते कहछ मैडम बफरिंग होची तमने भाबो तमरा नेट स्लो को मोर बफरिंग केमिति खेली परिबा को खेल हबो केमती द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कोन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अकॉर्डिंग केते इंडिया रैंक हे 1 2 3 4 5 भीतर तो नथिबा 10 रो 20 भीतर भी नै 20 रो 30 भीतर हम हां रहि जाउ छ हैला 23 पोजीशन रे रहउची द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रे इंडिया रो रैंक 20 था नेक्स्ट देखो स्लीपिंग केते स्लीप करछि बेटा मन रख 13 प्लेस फ्रॉम इट्स प्रीवियस 10th पोजीशन 10 नंबर पोजीशन आसी सीधा पड़ी कोठी 26 नंबर पोजीशन एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुची हैला मन रखिबो नेक्स्ट मते को वेयर वाज इंडियास फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन टील कार्बन स्टडी आपनकर कोठी हेतिला आंसर देलो तुक्का मारते बरछ हो देखो मते को इंडिया रा फर्स्ट टील कार्बन स्टडी दैट वाज अंडरटेकन एट को जगह रे द फर्स्ट रामसर साइट दी आंसर द फर्स्ट रामसर साइट पद्धस्थल डी के माला से जिन कॉर्पेट देखी चंद्रशेखर कौन अच्छी चंद्रशेखर ओ चंद्रशेखर तुम्हें आंसर देछो बी माच तुक्का बी ये तुक्का मारी दोछि ये कोन करूछि हैकिंग करूछि ना कोन ओडे करूछि तमरो क्लास में तो राइट आंसर आपनकर केवलाडियो नेशनल पार्क द स्टडी हाइलाइटिंग द पोटेंशियल ऑफ द टील कार्बन एंड मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन को मते को व्हाट इज द यूरोपियन यूनियंस प्रपोज्ड ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन टारगेट 2040 अच्छा यूरोपियन यूनियन जति के आपनकर कोन टारगेट नैचंदी प्रपोज्ड माने सेही तांको आडू कहचंदी कि 80% हमें टारगेट नौचू कि 80 के हमें इमिट करि दउ माने रिड्यूस करिवो भाई रे निजे निजे ती टारगेट नैचंदी भाबिलो मैम चंदू क्लास करू हमें जाउछु गेटिंग जेलस ओ माय गॉड जेलस काई होचो तमे आंसर देखु ना अरे से छोटो छुआटा तम समस्तिंगडू छोटो से चंद्रशेखर दे आंसर दियो नो से घुरिवो जल्दी जल्दी आंसर दियो केते हबो वेरी गुड 90% रिडक्शन फ्रॉम द 1990 लेवल्स तो आपनकर एमिशन केते 90% कंपेयर टू द 1990 लेवल्स नेक्स्ट को बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज अच्छा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हमें कहा को कहूजे दैट मींस आपनकर कोन डिग्रेड हबनी बायो रे हनो दैट मींस आपनकर कहा से रिलेट करछे मर्क्यूरी आपनकर डिग्रेडेबल माने डिग्रेडेबल कंडीशन में अछि नै दिस इज अ हेवी मेटल हमें जानि छे हेवी मेटल एलिमेंट जे कि आपनकर परमानेंटली टॉक्सिक हे कि आपनकर नेचर रे थाए तो ये बायोडिग्रेडेबल आपनकर पॉल्यूटेंट से हम रिलेट करबे ये ता जगह रे थाए छेड़छाड़ करले ये छाडी दे बायो मैग्निफिकेशन से आपनकर फूड चेन से यार रिक्वायरमेंट थाए सो राइट आंसर आपनकर कोन हबो ना ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जोटा नेचुरली डिकंपोज हेई परिबो सी हेला कोन ना सीवेज आपनकर डिकंपोज हेई परिबो डिग्रेड हेई परिबो नॉट डिग्रेडेबल पचा था आप माने कंफ्यूज हेता ऑड वन आउट कर छुआ ऑड वन आउट हैला हां आसा नेक्स्ट मते कहि दियो which of the following energy source reduces no atmospheric pollution कोडा हबो क्विक को which one will be the right answer जल्दी कहि दियो आंसर कोन हे जीवो ना which of the following energy sources reduces no atmospheric कोन ना pollution सहित हमें जीवा तो फास्ट थिंग